Hello everyone. Today we are going to discuss about transport of gases. Now during cellular metabolism, oxygen is utilized and carbon dioxide is produced. Now this carbon dioxide then picked up by blood and transported to lung. Over there it diffuses into alveoli from this pulmonary blood, and from this alveoli it is disposed into atmospheric air. Now this carbon dioxide, it is transported in blood in major three pathways. First, mainly it is transported by bicarbonate ions form. Around 70% of total carbon dioxide, it is transported in this pathway. Second is in the form of carbamino compounds. Around 23% of total carbon dioxide is transported by this pathway, and only 7% of carbon dioxide it is transported in dissolved state in plasma. Now if we talk about certain basic difference between arterial blood and venous blood, then partial pressure of carbon dioxide in arterial blood, it is around 40 millimeter of mercury, while partial pressure of carbon dioxide in venous blood, it is around 46 millimeter of mercury. So we can say around 6 millimeter of mercury, this amount it goes into dissolved state. Now if we talk about carbon dioxide content level in arterial blood and venous blood, then in arterial blood the carbon dioxide content level is around 48 ml in 100 ml, while in case of venous blood it is 52 ml per 100 ml. So we can say that 4 ml of carbon dioxide it is transported per 100 ml of blood from tissue to the lung. Now this image is of cellular level. On left side we can see tissue cell. Near to this there is interstitial fluid, and then there is capillary. Over here, for our understanding, we have taken only one RBC that is also in enlarged condition, so we can understand things clearly. Now let's start its first pathway. First, carbon dioxide is produced into tissue cell due to metabolism. From there it simply diffuses into interstitial fluid. As this carbon dioxide it is lipid soluble, so it moves easily from high concentration to low concentration. From this interstitial fluid it simply diffuses into blood. Now into this tissue, carbon dioxide it is produced continuously, so there is continuous movement of carbon dioxide from tissue to interstitial fluid and from interstitial fluid to blood. Now when this carbon dioxide it enters into blood, it dissolves into plasma, and only small amount of carbon dioxide it is transported by this pathway. Now some amount of carbon dioxide it enters into red blood cell. Again this red blood cell membrane it is also made up of lipid, so this CO2 it can simply diffuses from blood into red blood cells. Now once it enter over there, it binds with water in presence of enzyme carbonic anhydrase. Now it produces H2CO3, and this H2CO3 it is dissociated into HCO3 minus and H plus ion, that is proton and bicarbonate ion. Now this reaction of CO2 plus H2O which produces H2CO3, it also takes place into plasma itself, but that reaction is very slow. The reason is carbonic anhydrase it is not present into plasma, but it is present inside red blood cells. Now once this bicarbonate ion it forms, it moves from red blood cell to out of the red blood cell, and the proton or H plus ion that is generated it binds with hemoglobin, and this is the major route of HCO3 or bicarbonate ion by which carbon dioxide is transported. Now one more phenomenon happens over here. Because of movement of bicarbonate ions from inside to outside, inside become less negative and outside become
more negative. So in order to avoid that, there is movement of chloride from outside of the red blood cell into inside the red blood cell, and this is known as chloride shift. Now when chloride moves from outside to inside, it also brings certain water with it, and because of this movement of chloride and water, the venous blood side's red blood cell, they are more fragile and they have slightly more blood volume, so they look slightly more swollen, as well as their hematocrit is more. Now this is the first pathway. Let's move to second pathway, that is in form of carbamino compounds. Now next pathway by which carbon dioxide is transported is in the form of carbamino compounds. Now when carbon dioxide it enters into blood, it binds with plasma proteins and it binds with amino group of plasma protein. Now this binding with plasma protein, it is less significant. A reason is amount of plasma protein, it is very less as compared to that of hemoglobin. So major pathway even in carbamino compound is its combination with hemoglobin. So these are three major pathways by which carbon dioxide is transported into blood. First, dissolved in plasma. Second, it enters into RBC and reacts with water in presence of carbonic anhydrase. It forms H2CO3, which is dissociated into HCO3 minus ion and H plus ion. So this is second pathway in the form of bicarbonate ion, and third one is in combination with amino group of proteins known as carbamino compounds. Next, this blood reaches to pulmonary circulation near lung. Now let's discuss what happens at that place. First, the amount of carbon dioxide or partial pressure of carbon dioxide inside the alveoli, it is around 40 millimeter of mercury, while that inside pulmonary blood it is around 46 millimeter of mercury. So simply this excess amount of carbon dioxide which is dissolved in plasma, it diffuses from blood into the alveoli. So that is how dissolved carbon dioxide is transported into alveoli. Second pathway, the combination with carbamino compound. Now this combination of carbon dioxide with amino group of protein, it is reversible and very loose. So as soon as dissolved amount of carbon dioxide in plasma becomes less, this CO2 from amino group, it is dissociated and it goes into blood, and from there it simply diffuses into alveoli. Now coming to the last pathway, as soon as oxygen starts binding with hemoglobin, hemoglobin's affinity for hydrogen ion, it becomes less, and hydrogen ion, it gets dissociated from hemoglobin and it starts binding with bicarbonate ion inside this RBC in presence of carbonic anhydrase enzyme. Now as soon as this binding starts, the level of HCO3, it gets decreased inside this RBC. So HCO3, it starts moving from outside of RBC to inside of RBC, and this equation, it continues, this binding of H plus to HCO3 minus with and in presence of carbonic anhydrase, it continues and it keeps on producing H2CO3, which gets dissociated into water and carbon dioxide, and this carbon dioxide, it simply diffuses from RBC to plasma and from plasma to alveoli, and this is the last pathway. Now one more thing happens over here, that is because of the movement of HCO3 minus ion outside, it becomes less negative. So chloride ion that has already moved into the RBC, it goes from inside to outside RBC, and along with that it also brings certain water, and this phenomenon, it is known as a reverse chloride shift. Now let's discuss one more thing.
The process of converting H2CO3 into CO2 and H2O, as well as process of conversion of CO2 plus H2O in H2CO3, it is both catalyzed by carbonic anhydrase only, and carbonic anhydrase, it catalyzes this reaction in both direction. But what happens at tissue level is that it produces H2CO3 from CO2 plus H2O only, because over there is continuous supply of carbon dioxide, so there is more amount of carbon dioxide is present. So the direction of this conversion is from CO2 to plus H2O to H2CO3, while in case of lung, the amount of carbon dioxide over here it is limited, so it converts H2CO3 into CO2 plus H2O. Now during transport of carbon dioxide and oxygen, there are two effects that takes place. Let's discuss those. First is Halden's effect. It takes place into blood near lung. Over here what happens is that binding of oxygen with hemoglobin, it tends to displace CO2 from the blood and it promotes CO2 transport. It is known as Halden's effect. As we discussed earlier, what happens over here is that as soon as oxygen it binds with hemoglobin, hemoglobin's affinity for proton ions or hydrogen ions is decreased. So hydrogen ions, they get dissociated from hemoglobin and they binds with bicarbonate ion, which ultimately forms CO2, and then which CO2, this CO2 it is diffused from blood into the alveoli. Second is Bohr's effect, which takes place at cellular level in artery. Over here what happens is there is increased CO2 level in blood and it causes oxygen to be displaced from hemoglobin and it promotes oxygen transport. So what happens at cellular level is when more amount of CO2 is released from cell into the blood, more amount of oxygen is liberated from the hemoglobin and it is released into cellular level. Now next is carbon dioxide dissociation curve. Now we have already discussed oxygen dissociation curve and we know that it is of sigmoid shape. But carbon dioxide dissociation curve, it is linear in shape, because relationship between partial pressure of carbon dioxide and its volume in blood, it is simple. As the amount of as the partial pressure of carbon dioxide increases, there is more value of CO2 in blood, and that leads to their relationship curve linear. Now let's discuss respiratory quotient. Ratio of rate of carbon dioxide excretion and rate of oxygen consumption per minute is known as respiratory quotient. It is also known as respiratory exchange ratio. Now normal rate of carbon dioxide excretion, it is 4 ml per 100 ml per minute. Now we have already discussed that as carbon dioxide level on arterial side, it is 48 ml, while in case of venous blood it is 52 ml. So simply we can say 4 ml is excreted. Now if we talk about oxygen consumption, then it is 5 ml per 100 ml per minute. Now in last lecture of oxygen transport, we have seen that oxygen content level on arterial side, it is 20 ml, while that of venous side it is 15 ml. So we know that 5 ml of O2 it is utilized by tissue cells. So normal respiratory quotient, it is around 0.8. Now the respiratory quotient for carbohydrate, it is around 1, while it is less than 1 for fats and proteins. What it means is carbohydrate, it produces more carbon dioxide as compared to fats and proteins. With this we finish our today's lecture. Now let's summarize it. तो चलिए आज के लेक्चर को हम समराइज कर लेते हैं एक बार हिंदी में. जो भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलर लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा 3 पाथवे में. अभी जो फर्स्ट पाथवे है वो है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन. सेकंड जो पाथवे है वो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो कंपाउंड.
और काफ़ी छोटा सा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डिजॉल्व फॉर्म में। इसमें सिंपली क्या होता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होता है सेल से ब्लड के अंदर, वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है और उसी में ट्रांसपोर्ट होता है। सेकंड पाथवे है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो कंपाउंड। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड पहले तो बाइंड होता है एमिनो ग्रुप के साथ, एमिनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। अभी ये प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लाज्मा प्रोटीन और एक हीमोग्लोबिन इटसेल्फ। अभी जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसकी जो अमाउंट है वो एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है। सो कार्बामिनो कंपाउंड में जो मेजर पाथवे है इसके अंदर भी, कार्बामिनो इटसेल्फ के अंदर भी, तो उसमें जो मेजर पाथवे है वो है इन द कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन्स एमिनो ग्रुप, और जो स्मॉल पार्ट है वो है इन द कॉम्बिनेशन विथ एमिनो ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। अभी क्या होता है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है प्लाज्मा के अंदर, वो बाइंड करता है वाटर के साथ और प्रोड्यूस करता है H2CO3 विच इज डिसोसिएटेड देन इनटू HCO3 माइनस एंड H+ आयन। पर ये जो रिएक्शन है काफ़ी स्लो है प्लाज्मा के अंदर, बिकॉज यहाँ पे कमी है एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेस की। पर जैसे ही जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है रेड ब्लड सेल के अंदर, वहाँ पे वो बाइंड करता है वाटर के साथ, तो ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट है। द रीज़न इज यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेस, और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस CO2 एंड H2O वो प्रोड्यूस करते हैं H2CO3 जो डिसोसिएट होता है H+ और HCO3 माइनस आयन में। इसमें से जो H+ है वो बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो इससे ऐसी की एसिडिटी है वो कम हो जाती है। और जो भी बाइकार्बोनेट है वो कंटिन्यूस प्रोड्यूस होता रहता है ये प्रोसेस से CO2 + H2O2 H2CO3 और H2O2 HCO3 माइनस। तो ये जो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होता है CO2 का वो काफ़ी बढ़ जाता है। बिकॉज ऑफ दैट ये HCO3 मूव करना स्टार्ट कर देता है इनटू प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा के अंदर जब भी मूव होता है तो प्लाज्मा की नेगेटिविटी है वो बढ़ती जाती है एज कंपेयर टू RBC। तो इसको काउंटर करने के लिए RBC के अंदर मूवमेंट होती है क्लोराइड की फ्रॉम प्लाज्मा। अभी क्लोराइड है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव है, तो जब भी क्लोराइड की मूवमेंट होती है इनसाइड RBC, तो RBC के अंदर वो साथ में अपने साथ में वाटर भी लेके आ जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट वीनस ब्लड की साइड की बात करें तो वहाँ पे हिमेटोक्रिट है वो ज़्यादा होगा, और जो वीनस साइड पे RBCs हैं वो थोड़े फ्रेजाइल भी होंगे। और ये जो क्लोराइड की मूवमेंट है अलोंग विथ वाटर, इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसका एक और नाम है और वो है हैम्बर्गर फिनोमिनन। अभी ये 3 वे से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है लंग तक। फिर लंग के पास वहाँ पे पहुंचता है तो क्या होता है कि एल्वियोलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू ब्लड। ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो है 46 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, वाइल इन केस ऑफ एल्वियोलर एयर वो है सिर्फ 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी डिजोल्व अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की वो स्टार्ट हो जाती है मूव करना एल्वियोलाई के अंदर, और जैसे ये मूव होता है तो एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम होती जाती है प्लाज्मा के अंदर और वी कैन से ब्लड के अंदर। तो बिकॉज ऑफ दैट जो कार्बामिनो कंपाउंड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसोसिएट हो जाता है और वो भी मूव करना स्टार्ट कर देता है एल्वियोलाई के अंदर। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और प्रोसेस चल रही होती है और वो है मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू ब्लड, और ये जो ऑक्सीजन है वो बाइंड करना स्टार्ट कर देता है हीमोग्लोबिन के साथ। और जैसे ये कॉम्बिनेशन बनता है तो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है H+ आयन के लिए वो काफ़ी कम हो जाती है। तो जो ऑलरेडी बाउंड हाइड्रोजन थे हीमोग्लोबिन के साथ वो डिसोसिएट हो जाते हैं और वो बाइंड कर देते हैं नाउ HCO3 माइनस आयन के साथ, और ये जो फॉर्म करते हैं H2CO3 और वो कन्वर्ट होता है वाटर प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और जैसे जैसे इनसाइड कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगा एल्वियोलाई में। एट द सेम टाइम SCO3 माइनस आयन की भी वैल्यू कम होती जाएगी RBC में, तो जो प्लाज्मा में HCO3 आयन मूव हुआ था वो वापस आना स्टार्ट हो जाएगा RBC में। और बिकॉज ऑफ दैट जो क्लोराइड इनसाइड था वो स्टार्ट हो जाएगा मूव करना आउटसाइड, दैट इज इनटू प्लाज्मा, और उसके साथ वो अपना वाटर भी साथ में लेके जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड विद दैट वी फिनिश अवर टुडेस लेक्चर। थैंक यू।